what about the world itself? Is it part of your philosophy that the world has a soul, that the world has a consciousness all of its own? Yes, सब है वर्ल्ड आत्मा है वर्ल्ड कोड़ा आत्मा है तुम अच्छे तरह सिलेक्शन चलाना में वर्ल्ड क्या माइंड में नहीं है तुम Swami says yes, the world has a soul and it has a consciousness. तुम लोग सब लोग है वर्ल्ड है बोल और Swami says कि all of you are, this is the world. Now, does he mean group soul, this group soul of the No, group collective soul. humanity would be then equal to the soul of the earth, or is he saying the soul of the earth in and of itself, like this body has a soul, the earth in itself, the body of the earth has its own soul? बोलता जैसे हर एक आदमी का आत्मा अलग रहता है, ऐसे ही जैसे पृथ्वी का भी एक सोल है, समझे अलग आत्मा है या सब लोग एक हम ये पृथ्वी एक है हम लोग तो एक प्लैनेट में हम लोग बैठे दूसरा बहुत आकर्षण है बहुत प्लैनेट्स है रकम नहीं ये बोल रहा है कि जैसे हम लोगों का आत्मा है अलग अलग के अपने अपने आत्मा है ऐसे पूरा पृथ्वी का भी एक आत्मा है या आत्मा तुम साधन करने में पृथ्वी तुमको दर्शन कराएंगे बोलना Swami says yes, earth has a soul, and if you practice, if you do sadhana, then you can, Swamiji will see that you can talk to the soul earth of the earth, and you can see the earth. So because they always refer to this, so is that soul would be the Devi line. That soul would belong to the Devi line. ये देवी का soul है Swamiji? हाँ भूदेवी. Yes, it is Bhudevi, yes. पृथ्वी का बोल रहे भूदेवी. Earth soul is called Bhudevi. तो भाषा हम तेलुगु में बोला तुम लोग क्या बोलते हैं हमको मालूम. That is in Swamiji's language. Yeah. ये language problem है. If the world is being attacked by the Western world and are consuming and throwing away and using resources at the rate we are, might the world be in danger? अच्छा तरह उपयोग करने में एफर्ट नहीं होता है अच्छे तरह उपयोग नहीं करना है तो एफर्ट हो जाता है बस. So says कि if you utilize these resources, यूटिलाइज नहीं सब वस्तु आदमी बोला ना सेम बोलना भाई. वही बोल रहे हैं. यूटिलाइज नहीं की बात नहीं कर रहा था. फिर क्या बात की? सब वस्तु गुరించి वातावरण నుంచి प्रकृति में तैयार होता नया मॉडर्न आ मॉडर्न का विषय बात कर रहा है तो यूटिलाइजेशन की समस्या नहीं. Swami says कि if these resources, if they are utilized in a proper way, then there will be no pollution, no bad effect, and the atmosphere will not be polluted. But if they don't have any sort of proper checks over its utilization, and they don't know the methods to check the pollution, then it may. हमें बताएंगे एक फैक्ट्री है फैक्ट्री का हवा बैड है हवा का फैक्ट्री पानी में छोड़ रहे तुम लोग पानी में छोड़ने तो पानी हम लोग पी रहा है पानी में इन्हों जीवन खा रहा है उसको हम लोग खा रहा है दिन में हम लोग को एफर्ट लग रहा है हवा वातावरण धुआं वातावरण सेपरेट पब्लिक लगना को नहीं है ऐसे बोल. Swami says just like there is a factory and you throw the waste in the river and the water gets polluted and the people who drink that water they get affected, the life which is in water like fishes and other things they get affected, you eat those things, those fishes and all. So तेल निकालना में कुछ तकलीफ नहीं है तेल निकालते अच्छा you suffer if you drink that water, you eat the fishes because everything is contaminated. But if you don't throw the waste in the river and then you will not be affected. And दूसरा हवा में छोड़ रहा है हवा में कोड़ा नहीं छोड़ना अच्छा तरह धन के तपाना बोल. And same way you are throwing up the waste or any other sort of radiation up in the air, it's leaked out, then the whole atmosphere gets polluted. ये वाला जनता के तकलीफ हो गया
There should be some other way to dispose of that waste and such materials. They should not be thrown out like this, so that the atmosphere gets polluted. अच्छे तरह लगाने में If तो कौन such तकलीफ नहीं होगा। measures are taken, then there will be no pollution and people will not get affected. Many people have experienced visions that after this time of stress and challenge for humanity, that it is very likely that Christ will reappear in the world in the beginning of next century, perhaps. How do you feel about this? आना वाला। Swamiji says that yes, Christ is going to reappear. Yes, he's coming. तुम लोग अच्छे तरह प्रार्थना करना है तो जल्दी आ जाए। And if you pray for his appearance, then he will come soon. You understand? Yes. Yes. Could Swamiji tell us something about his own relationship to Christ? हाँ। स्वामी जी से क्राइस्ट का क्या रिलेशनशिप है पूछते हैं। तुम अंडरस्टैंड कर दो योगी रिलेशन हो जाता। Swami says that yogi has a relationship with other yogi. All yogis are related, so that you should experience yourself. एक मदर का बच्चा लो तो एक ब्रदर्स हो जाता है। Like children of one mother, they are like brothers. Same way. दोनों ब्रदर्स अच्छे एक लाइन में जाना है तो अच्छा अच्छा जनता की सेवा कर सकता है। दोनों ब्रदर से फाइटिंग करना है तो पांडव कौरव हो जाएगा। बोलना। So since if they are brothers, if they have the same kind of understanding, if they take the same path, then it's good. But if they go in different directions, then there will be fight. Like we had a fight between Kauravas and Pandavas in Mahabharata. I've had many impressions that during this time of transition afterwards, during Christ's reappearance, that many yogis will emerge in the world, many more than are available now. Does Swami? ऐसा सोचते हैं क्राइस्ट के आने के बाद और भी बहुत से योगीज आएंगे जो अभी जनता ये पृथ्वी का कितना सेवा करना है, सब लोग आए करके सेवा करेंगे। योगी लोग आएंगे, क्राइस्ट आएगा, बुद्ध आएगा, मोहम्मद आएगा, दूसरा महारुष लोग आएगा, सब लोग आए करके तुम लोग का प्रोजेक्ट करेंगे, रक्षा करेंगे। So yes, many yogis will be coming to this earth, like Christ, Muhammad, Buddha. They will all come and they will all protect you. ये क्या है वातावरण गड़बड़ी हो रहा है, अरे ये ये लोग का रक्षा करना आ रहा है बोलना। The Swami says because these times are changing and things are getting bad to us, so they are coming to 5,000 वर्ष के एक साथ set the things right and to save you people. 5,000 वर्ष के एक साथ चेंज होता है। 5,000 वर्ष हो गया। Swami says after every 5,000 years there is a change takes place in the world. So this is the 5,000 years are getting over now. So there is a change which is going to come. चेंज मतलब वातावरण चेंज बोलना। So everything will be changed. आदमी लोग चेंज। Earth change is part of that? Swami says there will be many kind of changes. Many kinds. And such changes takes place after every 5,000 years. Swamiji, can you say something in terms of Yeah. what happens at the time of transition or death? Is there मरने के समय क्या होता है स्वामी? अच्छे हो जाते हैं, बहुत शांति में चाहता है आदमी मरना का। अकाल मृत्यु में मरना आदमी का सोल नहीं जा सकता है, हवा में घूमना पड़ता है। अच्छे तरह मरना आदमी का टाइम हो गया, मर गया है तो बहुत शांति में चले जाते हैं। Swami says that one experiences a lot of peace when there is a transition from life to death, but only those people whose life is over, life term is over in this earth. Otherwise, if the people they die through accidents or through any other means, अकाल मृत्यु
that is called akal mrityu. They die before the time comes. వాళ్ళు So those people, they don't feel మళ్ళీ జన్మాన వరకు వాళ్ళు any గమ్మున peace or పడతారు. bliss, but they have to be in the atmosphere, and they don't go to the place where they are supposed to go till their time is over on this earth. बहुत अच्छे तरह आनंद में चले जाता है, बहुत इंटरेस्ट हो जाता है जाना का, ना वापस आने की इच्छा नहीं होता है. And during this transition period, those people who die natural death, and they feel that they should not come back because they feel so much of peace and bliss which they want to enjoy, and they don't want to come back. What is the mission of Swamiji in USA? स्वामी का यूएसए में क्या मिशन? स्वामी स्वामी जी का यूएसए में क्या मिशन है, ये लोग पूछ रहे हैं. हाँ, स्वामी जी का मिशन है तुम लोग को शांत में जिंदा काटना का, मेडिटेशन करके. दूसरा बात है तुम्हारा टेंशन कमी करने का हम आए हैं. Swamiji says that Swamiji's mission in this country is to relieve you from tension and to put you on to the path of meditation. तुम लोग कंट्री में अच्छा टेंशन कमी आने के स्वामी जी आते हो. And Swamiji's blessings to you all.